बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल केस देखते हैं CVS सिस्टम की। ठीक है, फर्स्ट है क्रशिंग चेस्ट पेन। क्या है? क्रशिंग चेस्ट पेन है और रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म एंड द जॉ। और इसके साथ क्या है? पेशेंट को डायाफोरेसिस है, पेशेंट को क्या है? पसीना है बहुत ज़्यादा। और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रोपोनिन इन द ब्लड एंड देयर इज द ST elevation. So what will be the diagnosis? So right diagnosis will be ST elevation myocardial infarction, where because the pain is radiating to the left arm and the jaw, and there is the crushing chest pain with diaphoresis and also the increased level of troponin. It indicates there is case of STME, EMI STEMI. There is the case of STEMI. Okay, ST segment elevation myocardial infarction. And second case is about the tearing chest pain. रेडिएट कहाँ करता है? बैक, रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ. And there is the BP difference between arms. Okay, and specific finding a widened mediastinum. It is specific. So what will be the diagnosis? Widened mediastinum. It is specific for aortic dissection. So the diagnosis will be aortic dissection. Third case is about young athlete collapses, and there is this systolic murmur increase with Valsalva, left ventricle outflow obstruction. What will be the diagnosis? So the best diagnosis will be what? It is HOCM. The diagnosis of HOCM. What is HOCM? It is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. And fourth one is the dyspnea, orthopnea, and then PND and S3. It's dyspnea, orthopnea, and there is the S3 systolic. It's systolic dysfunction. It indicates systolic dysfunction due to volume overload, and S4 indicates diastolic heart failure, diastolic dysfunction. And there is the specific curly B lines, which indicates what? It indicates the case of congested heart failure. Congested heart failure. ठीक है. और फोर्थ पे है पेशेंट with fever and new murmur, and there is the Geneva lesion and Usmle nodes. These are the what? Geneva lesions जो होते हैं palms and soles पे होते हैं, और ये क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? palms और soles पे होते हैं. palms and soles पे होते हैं. और जो Usmle nodes होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये फिंगर टिप्स पे होते हैं. ठीक है, और ये क्या होते हैं? पेनफुल होते हैं. और जो Geneva lesions होते हैं ये, ठीक है ना, ये पेनलेस होते हैं. ठीक है. Or the patient is IV drug user. In IV drug user, most common valve is affected, which is tricuspid valve. So it is the, what will be the diagnosis? It's diagnosis of endocarditis. Patient of endocarditis specific. Okay, endocarditis. And sixth, there is pleuritic chest pain, and relieved by leaning forward and diffuse ST elevation. So it is what? Pericardial effusion. And there is the back triad. में क्या आते हैं? 3 things आती हैं: hypotension, JVD, jovial venous distension, and muffled heart sounds. So it is, so what will be the diagnosis? It's specific for cardiac tamponade. ठीक है ना, ये cardiac tamponade का केस है. cardiac tamponade. Seventh पे है palpitations, irregular pulse and absent P waves. It's specific for what? What will be the diagnosis? Diagnosis will be the atrial fibrillation. Atrial fibrillation. It is specific. If there is the absent P waves in the clinical case, so the diagnosis will be atrial fibrillation. When there is the heartbeat more than 300-600 beats per minute. Okay. Eighth पे है unilateral leg swelling and Homans
Women's sign, it is what? It is calf muscle pain, the deflection of leg, I think. And there is this sudden dyspnea and pleuritic chest pain. And other specific findings S1, Q3 and T3. S1 in lead 1 there is the S wave, लीड 3 पे क्या बनती है, क्यू वेव बनती है, और टी वेव की क्या होती है, इन्वर्जन. सो इट इज स्पेसिफिक फॉर pulmonary embolism, PE, pulmonary embolism with history of DVT, deep vein thrombosis. 9th पे है ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट विद syncope, angina and exertional dyspnea. So murmur is crescendo, decrescendo. It's what will be the diagnosis? Crescendo, decrescendo, murmur, and old patient. It is specific for what? Aortic stenosis. Aortic stenosis. Aortic stenosis का पेशेंट होगा. ठीक है. एंड 10th पे है cyanotic baby. टेट स्पेल्स क्या होते हैं? क्या होता है कि जब बच्चा मिल्क करता है या मिल्क मदर का जो है ना फीडिंग करता है, ठीक है, और या फिर वो क्राई करता है, तो उस दौरान क्या होता है, हाइपोक्सिया होने की वजह से बच्चे में क्या हो जाता है, ब्लू पड़ जाता है, ब्लू. ठीक है. तो ये टेट स्पेल्स आते हैं. और ये क्या होता है, स्वेटिंग रिलीव्स सिम्टम्स. बच्चे जब अपनी पोजीशन स्वेटिंग पोजीशन में क्या होता है, सिम्टम्स रिलीज हो जाती हैं. और देयर इज द boot shaped heart. It is specific finding in what? Tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot. ठीक है. So that's all.